जो कौन था ये? देविका, थैंक यू देविका फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था स्टार्टिंग का। ठीक है, तो इतना पार्ट मिस हो गया बट एनीवेज चलेगा। ठीक है, ज्यादा पार्ट अच्छा मिस नहीं हुआ, थैंक यू सो मच देविका। ओके, नाउ कमिंग टू बेंचमार्क। अच्छा बेंचमार्क हो गया। सो बेंचमार्क बेसिकली, benchmark and triangulated height both are same, but the thing is that in benchmark we use some cut or a stone or shown on a building as a permanent reference for survey purposes. ठीक है, just a minute. या ठीक है, नाउ कमिंग टू अप्रोक्सीमेट और रिलेटिव हाइट्स। तो ये मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। अगर अभी भी किसी, अभी मैं इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, अभी भी किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क मी। अगर इसके पहले वाला लेक्चर जस्ट जो अभी खत्म हुआ था थोड़ी देर पहले, वो भी किसी ने अटेंड किया तो मैंने इसमें बताया था रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ का कंसेप्ट। ये पीडीएफ आप लोग को ग्रुप पे मिल जाएगा ना, आई थिंक सो आई ऑलरेडी सेंट इट। तो वहां पे जाके ये सब रेफर कर सकते हो। सो डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन या अभी भी किसी का डाउट है? वर्धन, आर यू हैविंग एनी डाउट? That अनंत? no, sir. ओके ठीक है, और किसी को डाउट नहीं है ना? मैं बात देख रहा था, अयान, देविका, हरीश, किशोर, परी, रिया, किसी को डाउट है? ओके, no worries. So I'm continuing further. Now coming to contour lines. So what are contour lines? So contour lines are imaginary brown lines. ठीक है, these are brown color में इनको represent करते हैं। ठीक है, so these are imaginary lines, a line on a topographical map joining places of equal height above the sea level. यहाँ पे एक word ऐड कर दो, mean sea level. Contour interval, अब contour line क्या होता है? एक imaginary line होता है जो in actual it's not visible to us, but it is a line which is connecting places having same height above the sea level. ठीक है, so for example ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, now this and this, these two points having same height, तो इसको एक एक से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस से इसको यहाँ पे सा बना देते हैं। these two points are having same height, तो इसको ऐसे, तो places having same height above the sea level are connected by these imaginary lines। ठीक है, तो इनको ऐसे कनेक्ट करेंगे, इसका अलग होगा। ठीक है, सो अब कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है? व्हेन देयर आर टू कॉन्टूर्स, ठीक है, जैसे ये दो कॉन्टूर है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ना, इट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्टूर लाइंस। सो कैन एनीवन टेल मी, अनंत या कोई भी, कॉन्टूर इंटरवल का वैल्यू कितना होता है हर मैप के लिए? सारे मैप के लिए एक ही 20 meters. वैल्यू होता है, कितना होता है? 20 meters. या करेक्ट, सो 20 मीटर्स इज द नंबर जो कि होता है कॉन्टूर इंटरवल। सो वेन एवर दे आस्क यू, जनरली बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, दे विल आस्क यू सच क्वेश्चंस कि डिफाइन कॉन्टूर इंटरवल। सो विल राइट द डेफिनेशन कि इट इज अ डिफरेंस इन हाइट बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉन्टूर लाइंस। सेकेंडली दे विल आस्क यू what is the contour interval of this particular map। तो don't get confused, don't start calculating or something, scale वगैरह से measure मत करना। the basic thing is कि हर map का contour interval is 20 meter only। so 20 meter is the contour interval for each and every map। ठीक है, फॉर्म लाइंस अपने को सिलेबस में नहीं है, सो नो नीड टू रेफर दिस। ठीक है, डिप्रेशन। ओके, सो एग्जाम्स के बाद जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है वो ये है, डिप्रेशन। सो डिप्रेशन इज अ जनरल लोअरिंग ऑफ लैंड एंड नाउ व्हाई डज इट डिप्रेशन? डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, इन दिस थिंग स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड होता है, उसका वो उतना एरिया उड़ जाता है। ठीक है, इट गेट्स लोअर्ड। ठीक है, नाउ व्हाई डज इट हैपेंस? इट हैपेंस इधर ड्यू टू विंड इरोजन, सॉइल चैप्टर में पढ़ा होगा विंड इरोजन, और ड्यू टू सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स आर टाइप ऑफ विंड इरोजन, मतलब विंड इरोजन उसी की वजह से होता है, सैंड ड्यून्स की वजह से। ठीक है, so the word DEP, depth, is printed on the map in an arid area, so you can see here, 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 and can you notice this brown color के patches something, ऐसे कुछ दिख रहे हैं? Can anyone tell me what is this?
किसी को क्या आइडिया है कि ये ब्राउन पैचेस जो मैंने अभी Sand लाइन से, dunes. या करेक्ट. सो दीज ब्राउन लाइंस ऑन द मैप विच आई हैव हाइलाइटेड आर सैंड ड्यून्स. चाहिए तो मैं इसको अलग तरह से तो हाईलाइट करता हूँ. सो या ये जो लाइन दिख रहा है ऐसे 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 ऐसे, ये जो पार्ट्स हैं ना ब्राउन पैचेस, दीज आर सैंड ड्यून्स ओनली. ठीक है. So such depressions or hollows are often found on the top of mountains or dunes. So depressions वगैरह जो होते हैं, these are formed due to sand dunes and they are generally found on the top of mounds or sand dunes. ठीक है. अब थोड़ा ये फिर से एक मिसलेनियस पार्ट आ गया. अब ये सब जो है ना जनरली बोर्ड्स में उतना डिटेल में पूछते नहीं, दे विल आस्क यू ओनली डेफिनेशन फॉर दिस पार्ट. ओके. नाउ ग्रेवल वेस्ट. ग्रेवल वेस्ट का डेफिनेशन क्या है? तो वेस्टलैंड और बैरन लैंड कवर्ड विद ग्रेवल. तो ग्रेवल पता है क्या होता है? दे आर लाइक स्मॉल स्मॉल ऐसे ऐसे पार्टिकल होते हैं थोड़े छोटे छोटे, which are very porous or you can say lightweight होते हैं. स्टोनी वेस्ट, barren land which have stones. ठीक है, ओनली पत्थर एंड पत्थर. शीट रॉक, continuous stretching of horizontally embedded hard rocks which expose the surface and are well polished with the agents of erosion. तो शीट रॉक इज नथिंग बट इट इज वेरी मच सिमिलर टू, हम लोग ने अभी जो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मैं वापस से दिखा देता हूँ. कहाँ गया? या रॉक आउटक्रॉप. सो जो रॉक आउटक्रॉप है विच इज सिमिलर टू अ शीट रॉक, कि कैसे जो स्टोन होता है अंदर से नीचे, मतलब नीचे से बाहर आ जाता है एंड ऊपर से पॉलिश हो जाता है क्योंकि मल्टीपल इरोजन और वेदरिंग होता है, डेनुडेशन वगैरह होता है. समझ में आ रहा है ना? ओके. सो शीट रॉक इज नथिंग बट सिमिलर टू अ रॉक आउटक्रॉप. सैंड ड्यून्स. ओके. सो सैंड ड्यून्स अभी मैंने बताया क्या होते हैं. सो दीज आर, एक मिनट पहले चेंज करता हूँ. माउंट्स और हिल्स ऑफ सैंड डिपॉजिटेड बाय एक्शन ऑफ विंड. ठीक है. सैंड ड्यून जनरली सबको पता होगा. सर हाउ टू फाइंड सिक्स फिगर ग्रेड. ओके विष्णु प्रिया. Six figure grid we won't do in this lecture. It will take one or two lectures more. Then further when we will proceed in a syllabus, थोड़ा after complete this theory part and all, we will go for six figure grid. ठीक है. Six figure grid and distance measurement हम लोग लास्ट में रखेंगे. We will keep it in the last because थोड़ा it's a detail and a, you can say a brainstorming वाला part. तो थोड़ा it will come at last, not now. हाँ. सो सैंड ड्यून्स पता है क्या होता है? तो जनरली ऐसे उनको ऐसे बता सकते हो कि ऐसा कुछ होता है जनरली लाइक अ समथिंग लाइक अ टॉर्नेडो और समथिंग which is full of you can say sand particles blowing. ठीक है. So this indicate arid or desert conditions on the map. On the map, sand dunes are represented by small brown patches. Yeah, one more notice it in barren, rocky and sandy soil are indicative of infertile region. ठीक है. सो जनरली ये नहीं पूछते बैरन रॉकी एंड सैंडी सॉइल वाला, बट एनीवेज. सो सैंड ड्यून्स क्लियर हुआ कि बेसिकली दीज आर लाइक sand particles or hills of sand blowing at a very high speed which results in lowering of the soil which results in again depression or something. ठीक है. विष्णु प्रिया. ओके. नाउ कमिंग टू दिस स्किन वाला पार्ट. सो इट इज अ लार्ज आउटडोर oven for drying and baking, एक मिनट, for drying and breaking limestone and pottery etc. So this is a lime kiln. उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं. ठीक है. एंड किन को मैप में कभी कभी खेड़ा के नाम से भी इंडिकेट करते हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ किन, वन लाइम किन, अनदर वन ब्रिक किन. लाइम किन में क्या होता है कि इट्स अ, यू कैन से इट्स अ वेरी लार्ज और इट्स अ वेरी लार्ज ओपन आउटडोर ओवन फॉर ड्राइंग एंड बेकिंग ब्रिक्स. तो लाइम किन में क्या होता है? इट्स फॉर बेकिंग लाइमस्टोन. एंड ब्रिक किन में होता है इट्स फॉर बेकिंग ब्रिक्स. Mine obviously सबको पता है what are mines, a large excavation made into the earth to extract minerals. Stone quarry, a place where stone or slate is obtained by cutting or blasting for building purposes. It is usually open to the light and in the way differs from a mine. ठीक है. So mining में in mining we generally excavate the earth for coal, coal or you can say other minerals
But in case of stone quarry maybe we perform the same procedure. We blast the mountain, we do excavation, we do everything. But the thing is that in quarry, we only search for stones for building purposes. Okay. The presence of kilns and mines in quarries are indicative of human activity and hence settlements. Okay. Aqueducts. So aqueducts is an artificial narrow channel or a pipeline built of masonry used for carrying water. It is usually raised or elevated. So it is like a bridge carrying or a canal. On the map, it is shown by a word aqueduct. You can see here. This blue line is an aqueduct. Okay. Now coming to protected forest. So what are protected forests? These forests planted as act as shelter belts, or you can say barrier against wind, running water, to prevent soil erosion or to prevent shifting of sand dunes in the desert area. So protected forest basically क्या होता है कि these are some sort of forest which is only limited for the people living there. मतलब इसको इसमें ना बाहर के लोगों को जाने दिया जाता है, मतलब बाहर के लोगों को जाने नहीं दिया जाता इसमें. And it is like you can say it is for preserving purpose. मतलब ecological rules and वो भी होते हैं environmental rules and all, for which we need to protect some forest for flora and fauna, and these forests also act as a barrier against wind or running water. ठीक है, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन और सम. ठीक है. सो रिजर्व फॉरेस्ट, या रिजर्व फॉरेस्ट को हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, RF. ठीक है. एंड व्हेन दिस इज R dot F. So can anyone tell me the difference between RF and R dot F? Anyone tell me the difference between RF and R dot F? ओके. एनीवेज, सो RF और R dot F में क्या डिफरेंस होता है? RF मींस, किसी का मैसेज है, वन ऑफ देम इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. या करेक्ट हेली, जो भी है. ठीक है. सो दिस इज रिजर्व फॉरेस्ट and this is representative fraction, and this is a board question. बोर्ड में कई बार पूछा है, and even many schools के prelim में भी दिखेगा. So representative fraction is a type of a scale, and reserve forest, as you know, reserve forest is something, it is an area. In this forest cutting is not allowed, but in this forest materials can be collected only by the local people. मतलब जो the people living there, जो वहाँ पे लोग कॉमन में रहते हैं, वहाँ के रहने वाले जो हैं, बस वही लोग इस फॉरेस्ट में जा सकते हैं, वहां से सामान कलेक्ट कर सकते हैं. बट नो बडी फ्रॉम आउटसाइड, नो आउटसाइडर्स आर अलाउड इन दिस फॉरेस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ, like you can say for like collecting something or for any entertainment purpose or something. Now coming to pylon or main power line. Pylon, ठीक है. So power line क्या होता है? Power line तो सबको पता है क्या होता है. There are two types of power line. One is surveyed and another one is unsurveyed. Pylons क्या होते हैं? A tall tower-like structure used for carrying electricity cables high above the ground. ठीक है. दृष्टि मजीठिया. Any one of you is calling me right now? Just wanted to know. Okay, ठीक है. So pylons क्या होते हैं? Pylons is a tall tower or like it is a tower-like structure. You can see here and even here. So these are pylons which are constructed for like carrying electricity, and these are made with high cable. Like they are like यहाँ पे देख सकते हो cables वगैरह. इसमें cables होते हैं and these are like of very high voltage. ठीक है. अब दो तरीके के pylons होते हैं. एक तो unsurveyed होता है and one is surveyed one. ठीक है. तो सर्वेड वाले क्या होते हैं? सर्वेड पाइलॉन्स आर वन विच आर लाइक प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड विद प्रॉपर सर्वे एंड ऑल. लाइक हाँ, उसमें कितने वायर का करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चाहिए, एंड प्रॉपर बैकअप प्लान इज डन, फ्यूज वगैरह एवरीथिंग इज फिटेड. बट इन अनसर्वेड पाइलॉन्स नथिंग सर्वे, like not much survey is done,
not proper like calculation is done ki how much voltage should flow through it, yeah, how much is the maximum limit, or any fuse is fitted in the wires or something, for like just in case if any short circuit happens. So there are much risk with unsurveyed pylons as compared to surveyed. So this is surveyed and this is unsurveyed. Okay. Now coming to diggy. So diggy is generally visible in the northern plains. So diggy is a like you can say a small pond type structure which is made into the ground and which is used for collection of water. Okay, so you can see this diggy. ठीक है, डिग्गी को जनरली हम लोग represented with the word डिग्गी itself. ठीक है, so it is mainly used for agriculture purpose and for collecting the rain water. Overhead tank, you can see overhead tank generally visible होगा. मुंबई में generally overhead tank visible नहीं होते, but in northern India, whenever you will visit like cities like भोपाल, इंदौर, जयपुर and even लखनऊ and all, वहाँ पे ऐसे tanks वगैरह visible होंगे. ठीक है. रेस्ट हाउस और इंस्पेक्शन बंगलो. रेस्ट हाउस या इंस्पेक्शन बंगलो क्या होता है कि दीज आर जनरली मेड फॉर आई एस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सर्वेंट्स. फॉर एग्जांपल, you are living in a city, say Bangalore. Okay, you are living in Bangalore. Bangalore has its own rest house or inspection bungalow. These inspection bungalows or rest house are constructed for just in case the chief minister is visiting your city, or the prime minister is visiting your city, or an IS officer is visiting your city. So for their you can say for their living and all, this structure and all this arrangement has been made. Covered tank. Okay. So this one there is nothing to explain covered tank and all. साइफन. साइफन इज मोर ओवर रिलेटेड टू योर फिजिक्स वाला पार्ट. इसमें क्या होता है कि ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर चेंज यहाँ पे. नाउ इफ यू वांट टू इरिगेट, से यू वांट टू इरिगेट ऐसे, योर फील्ड इज हियर, यू वांट टू इरिगेट यहाँ पे, बट योर वाटर इज हियर. अब यू कांट कंस्ट्रक्ट ऐसे अंदर से पाइपलाइन लेके नहीं जा सकते क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा खर्चे का काम है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज ईदर डू मैनुअल वर्क, take out water, go here and put it, take out water, go here and put it, but this is also very expensive and manual work हो जाएगा. So what you can do is construct some pipelines. ठीक है, bent pipelines जो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे. These pipelines you can see here, ऐसे ऐसे ऐसे, these are going and these work on the pressure system. When the pressure here becomes high and the pressure here becomes low, the water automatically go from here to here. सॉरी, यहाँ पे जब हाई हो जाता है एंड यहाँ पे जब लो हो जाता है, यहाँ पे जब हाई प्रेशर होता है एंड यहाँ पे जब लो प्रेशर होता है, तो एज यू नो, बीट एयर और एनीथिंग, it travels from high pressure to low pressure. The water will travel from high pressure to low pressure and thus यहाँ पे irrigation होगा, पानी आएगा. Now, what is a sluice? Sluice is a sliding or a gated opening to control the flow of water. तो कभी कभार क्या होता है कि during rainy season, when excessive water flows, you need to control the water. So just in case कुछ ज़्यादा damage ना हो, you make these gates. ठीक है? Whenever you open these gates, water बाहर आता है. गेट नीचे किया, वाटर रुक जाता है, फिर अगर उसको ऊपर किया, वाटर बाहर आता है, ऐसे. So these are for controlling the flow of water or for regulating the flow of water. So we complete this whole PDF here. ठीक है, it was a 13-page PDF and I will send you one definition list as well on the group. ठीक है, just in case if you are having any doubt, you can ask me now. Approximately I think so 10, yeah, 10 minutes are left, exactly 10 minutes are left. So if you are having any doubt, you can just ask me now. किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? यथार्थ, वर्धन, अनंत, अयान, रिया, किसी को कोई डाउट है? इज एनीवन हैविंग डाउट? देवांश, विष्णु, तेजू, स्फूर्ति, रिया, रंजिता, निहारिका, हिली, हर्षित, एनीवन हैविंग डाउट? ओके, आई थिंक सो किसी को डाउट नहीं है. इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय पर्सनल नंबर. ग्रुप पे मेरा नंबर है. ठीक है, यू कैन जस्ट सेंड मी अ डाउट. ओके, ऑल द बेस्ट. आई एम एंडिंग द मीटिंग.